Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And today, this one thing that we are going to discuss is why noble gases are unreactive. Like, why don't we see them making bonds at all? What is something that's special they do have? And you guys have seen a noble gas like helium, which never makes a bond. And that's why it's called inert gas, something which is unreactive. It reacts with nothing. Okay, this happens because they have stable configuration. What do we mean by stable configuration? In our previous video, we learned that an atom has a preferred number. It has a preferred number, which means an atom warrants 0 or 8 or full. So by stable configuration, we get to know that noble gases has their preferred numbers, due to which they're stable and they don't make bonds. So overall, what charge do they have then? Though overall they have neutral charge on them, which makes it unreactive. This happens because, let's just take an example. For example, how a charge gets stable. So हमारे पास stable charge comes through the number of proton and the number of electron. Because if they cancel out each other completely, then we get a neutral charge. Let's just take helium. It has the two number of proton and two number of electron. Positive and negative cancels each other out and gives us neutral result. But for example, in in Na, which is sodium, we have 11 electrons. Okay, and we have 11 protons. Okay, and it's a bit unstable. If we see, the first shell gets 2, the second shell gets 7. Okay, it still wants. Wait, sorry. It has 8, and it has this one more electron. What our atom can do is either lose or gain on the basis of energy consumption. An atom always gain or lose on the basis of energy consumption. हमारे पास जो एक ये एटम है, इसको लूज करने के लिए energy that is being used is smaller than the energy that will be used to get 7 more, because हर शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, 0 चाहिए, फुल चाहिए. यहाँ पे 7 1 है, तो which means we want 7 more. And we have also learned this rule that we can always only share 3 electrons. So this is not possible as well. So this atom, or this electron, will be given to another atom, or it will lose its electron, and it will get what charge? It will get a positive charge. Why a positive charge? Because we'll get 10 electrons, okay, and 11 protons. 10 and 10 प्रोटॉन्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. बाकी हमारे पास एक प्रोटॉन का जो चार्ज बचता है, ठीक है, इट डोमिनेट्स द एटम. ठीक है, बाय डोमिनेटिंग द एटम, दैट्स वाई हमारे पास मोस्टली यू सी Na+1 होता है. इट इज़ बिकॉज हमारे पास जो प्रोटॉन होता है वो डोमिनेट कर देता है किसको? एटम को. ठीक है. Now let's just move towards what
bonding that we can learn today. Because देखो बॉन्डिंग हमारे पास तब होती है जब हमारे पास एटम स्टेबल नहीं होता. तो हमें पता है कि नोबल गैसेस के अंदर बॉन्डिंग नहीं होती है. जो एटम्स जो हमारे पास जो भी एटम्स होते हैं, ठीक है, दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन, वी नेम इट मेटालिक करेक्टर. ठीक है, वो मेटालिक करेक्टर माने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल we call it sodium. Sodium is a metal and it has a quality of losing, right? हमने अभी देखा. So that's why it's a metal. ठीक है, और if it's something that gains, अगर कोई भी एटम है वो गेन कर रहा है, then it has non metal character. ठीक है, जो हमारे पास जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, हमारे पास कार्बन हो गया, ठीक है. So these are what? These are non-metal. बट हमारे पास एक ऐसा एटम आता है व्हाट इज़ हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, जो हमारे पास दोनों ड्यूअल पर्सनालिटी रखता है. इट्स मोर लाइक समवन हु इज़ हिपोक्रेट. इट कैन behave like metal and it can also behave like non-metal. ठीक है, so further if we'll study more, we'll get to know that what actually is happening. If it loses, that's metallic bonding. ठीक है, हमारे पास 3 तरह की बॉन्डिंग होती है जो हम अभी पढ़ लेते हैं. We just get the overview and then we'll learn in detail in next videos. If it loses or you can say lost, वो होती है metallic bonding. ठीक है, that's called metallic bonding. And then if it's something that actually transfer होता है हमारे पास, ठीक है, ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो गया, जैसे 1 गेन कर रहा है, ठीक है, और 1 लूज़ कर रहा है, ठीक है. 1 गेन्स एंड 1 लूजेस इज आयोनिक बॉन्डिंग. ठीक है, मतलब कि Na जो है वो आयोनिक बॉन्डिंग बनाता है बिकॉज वो एक तो लूज़ कर रहा है, उसने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो किसी और के पास जाएगा. और एक होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो जस्ट कोवलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं. कोवलेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैपन्स इन द वैलेंट शेल्स. वैलेंट शेल्स जो होते हैं हमारे पास कौन से होते हैं, लास्ट शेल्स को हम वैलेंट शेल्स बोलते हैं. ठीक है, और ये हमारे पास शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली हैपन इन द लास्ट शेल्स, so that's why it's called covalent bonding. ठीक है, so this was all about today's class. We learned why noble gases are unreactive. Then later we learned what types of bondings are there in total, and why an atom chose to spend less energy, you know, less energy in order to stable itself. So yeah, that was about it. If you guys have any questions, you guys can ask me in the comment sections.